What do you understand by GERD, gastroesophageal reflux disease? Now, stomach makes juices. They are acidic in nature. अब क्या हो रहा है रिफ्लक्स होके वो एसोफेगस में आ रहे हैं एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती इस पाथवे जो आपके माउथ को स्टमक को कनेक्ट करता है अब द एसिड फ्रॉम द स्टमक is going upward in esophagus. दोनों के epithelial change है दोनों के function change है in long term what do you think can happen अगर ये acid ऊपर जाता रहा what do you think can happen if GERD continues for longer time what do you think can happen पहले तो erosions होंगी redness होगी right esophagitis होगा later on उसका जो epithelium होगा वो permanently change हो जाएगा बार बार acid irritation से and after that do you think there are chances of carcinoma developing now GERD की pathophysiology is कि lower esophageal sphincter which is between esophagus and stomach it does not close it remains open so acid refluxes upwards what symptoms can a patient with GERD present they will have heartburn burning sensation after meals when they will be lying flat after meals because meals will trigger acid production for digestion and since their sphincter is not closed the acid will be going upwards dysphagia painful esophagitis जब वो सारा acid बंद कर लेगा esophagus को तो you will have problem putting food down your pipe Acha, it also presents with respiratory symptoms because the reflux can go into respiratory tract and can give asthma-like symptoms. Asthma-like symptoms ऐसे आते हैं कि जो when the acid enters esophagus and the nerve endings are stimulated, the brain responds by asking both the mucus production in lungs to start and the smaller bronchioles will constrict so the person will have asthma like symptoms adult onset asthma person will start coughing also there will be shortness of breath and acid is coming back through the esophagus upwards so you might get teeth damage enamel of the teeth will be damaged the pathophysiology consists of that lower esophageal sphincter is not working something is wrong with the tone or there is obesity or pregnancy. अब obesity or pregnancy से क्या होगा stomach will be more and it will push acid upwards. Other factors are hiatal hernia. What happens in hiatal hernia? There's pressure gradient between abdomen and thoracic cavity. Like this is abdomen, this is diaphragm. There is pressure gradient. In hiatus hernia में क्या होता है? Basically intestine bulge out करती है because there is a hole in your diaphragm. So pressure gradient is not maintained, so the acid can go up. The pressure gradient is not maintained and pressure will go upwards. Clinical feature will be heartburn, dysphagia, some respiratory symptoms, and damage to teeth enamel. There are two types of hiatus hernia we have. Hiatus because hiatus means break, and this hernia bulging of intestine occurs in diaphragm. This hiatus or break is in diaphragm. अब इसकी दो types होते हैं एक rolling, this one is rolling, and the other one is sliding. Sliding में क्या होता है stomach का part ही ऊपर जा रहा होता है rolling में क्या होता है अलग से एक part जा रहा होता है I will explain this again. Rolling में क्या होता है there is a hole और वहां से निकल रहा है separately. Whereas in sliding stomach का part as a यहीं पे ये जो उसका gap था between diaphragm जहाँ से esophagus and stomach were connecting इसी में bulge होके ऊपर जा रहा है
और वल्वुलस बन गया। वल्वुलस क्या होता है कि वो खुद ही जब गट या इंटेस्टाइन अपने आप पे ट्विस्ट होकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन विल इज मोर लाइकली टू हैपन इन स्लाइडिंग वन। Later on, a person will have acid laryngitis, hoarse voice, recurrent chest infection क्योंकि acid reflux हो रहा है, cough, asthma, and the DD will have atypical chest pain. Atypical chest pain because this is not a typical chest pain of angina, which is retrosternal radiating towards neck and shoulder. It will not radiate, although it will feel like this is angina, but this is heartburn. अब complications we have esophagitis, inflammation हो जाएगी epithelial layer की because acid is constantly damaging. Then there will be Barrett esophagus. Barrett esophagus हम तब कहते हैं जब just normal squamous lining होती है lower esophagus की, it is converted into columnar mucosa. What other complication we will have? Third, the person is likely to develop anemia because in long-standing esophagitis, it will bleed and the person will have iron deficiency anemia due to bleeding. उसके बाद जो एसोफेजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, वो हील करेगी तो फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस से स्ट्रक्चर बनेंगे एंड इट विल नैरो डाउन। एंड देन गैस्ट्रिक वल्वुलस। वल्वुलस में क्या होता है? What happen in valvulus? The bowel twist over itself and obstruct कर जाती है। When there will be intrathoracic hiatus hernia, वो अपने आप पे ट्विस्ट करके gastric valvulus ट्विस्ट कर जाएगी और there will be air bubble under the chest. ये देखो in X-ray there is air bubble in the chest. What investigation should we go through to diagnose GERD? occult blood होता है जो कि fresh blood आ रहा होता है। Sorry, occult blood is hidden blood जो कि ब्रेक डाउन होके फिर बाद में नजर आ रहा होता है हमें। लाइक इंटरनल ब्लीड हुआ हेमाटोमेसिस से अंदर, लाइक एसोफेजाइटिस का ब्लीड हो गया और बाद में वो ब्रेक डाउन होके सारा हेमोसिड्रिन सारा ब्रेक डाउन होके जब हमारे पास आएगा तो वो डार्क कलर का होगा, तो हम उसे ओकल्ट ब्लड कहते हैं। हियाटिस हर्निया वाला पॉइंट ये है कि डायफ्राम में ब्रेक आ गया। ब्रेक आने से क्या हुआ है कि स्टमक जो है प्रोट्रूड आउट कर रहा है। हर्निया का मीनिंग होता है कोई भी जो आपकी इंटेस्टाइन है वो प्रोट्रूड आउट कर रही होती है, और यहाँ पे हियाटिस कहाँ पे आया हुआ है? ब्रेक, जैसे डायफ्राम में ब्रेक है उससे बाहर निकल रहा है आपका स्टमक, और सिंस दिस ब्रेक इन डायफ्राम आप प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर सकते, इसी वजह से जर्ड हो रहा है। बट हियाटिस hernia is very rare क्योंकि a lot of people do not have holes in their diaphragm. अब ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि वेट लॉस करें। देन देयर इज वेट लॉस डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में है कि एक तो पेशेंट को कहना है हेड एलिवेट करना है 6 inches so that acid goes down through peristalsis, does not come back. दूसरा, अल्कोहल, चॉकलेट, फैट, जूसेस, कैफीन, ऑल ऑफ देम ट्रिगर एसिड रिफ्लक्स, उन सबको अवॉइड करना है। वेट रिडक्शन करनी है। सिगरेट स्मोकिंग क्यों? बिकॉज इट इरिटेट्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड प्रोड्यूसेस मोर एसिड। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स और खाने के 1 to 1.5 hour बाद नहीं सोना। यू हैव टू स्लीप आफ्टर एटलीस्ट 2 hours आफ्टर कंज्यूमिंग द मीट। और उसके बाद कैल्शियम चैनल एंटागनिस्ट नाइट्रेट्स कंज्यूम नहीं करने। वाई? Because LES does not close, there's already tone problem, so we cannot give calcium channel antagonist. We will let the lower esophageal remain open. ये तो सारी होगी डाइटरी मॉडिफिकेशन। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप करवा सकते हैं। हम हिस्टामिन ब्लॉकर दे सकते हैं, फेमेटिडीन, फेनिटिडीन, नेजोटिडीन, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर दे सकते हैं सो दैट प्रोटॉन्स
We should not give calcium antagonist, nitrates, drugs which decrease lower esophageal sphincter pressure and which will increase the reflux, like calcium channel antagonists, nitrates, thiophyllin. ये सारे नहीं देने. Medical treatment में we have to give histamine blockers so that they block histamine receptors in the parietal cell and less acid is made, and proton pump inhibitors like omeprazole, lansoprazole, esomeprazole. और उसके बाद जो हमारे पास सर्जरी के ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ना स्टमक का पोर्शन लेके एसोफेगस के लोअर पॉइंट पे बैंड बना देते हैं. पोर्शन ऑफ स्टमक इज बेंडेड अराउंड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. इसको निशान फंडोप्लाइकेशन कहते हैं. The lower esophageal sphincter, or LES, is a one-way valve that separates the esophagus from the stomach. When food or liquid is swallowed, the LES opens transiently to allow passage into the stomach. Otherwise, the sphincter remains closed to prevent stomach contents from flowing back up into the esophagus. However, for patients who suffer from reflux, the LES abnormally remains open, allowing stomach secretions and contents to reflux up into the esophagus, causing symptoms. Should medical and lifestyle management fail to resolve reflux symptoms, such patients may be a candidate for surgical intervention, which involves physically tightening the LES. The Nissen fundoplication, or stomach wrap, is the standard approach to surgically tighten the LES as shown here. The procedure essentially involves wrapping the top part of the stomach around the LES like a belt, using tiny instruments inserted through small abdominal incisions. How do we diagnose GERD? How do we diagnose GERD? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पहले तो आपने सारे टिपिकल जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल के सारे सिम्टम्स हैं, लाइक वेट लॉस होगा, एनीमिया होगा, डिस्फेजिया होगा, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी अगर 50 से 5 ईयर से अबव है तो वी विल टेक अ बायोप्सी टू रूल आउट कार्सिनोमा. उसके बाद वी हैव टू डू अ 24-hour पीएच मॉनिटरिंग. क्यों पीएच मॉनिटर करना है? क्योंकि esophagus has neutral pH, but due to acid reflux the pH will be less than 4. We'll now discuss some of the additional tests that can be used to diagnose GERD. An upper GI series, also called a barium swallow, is a special set of X-rays that are taken after you drink a thick liquid containing barium, which coats the inside of your esophagus. अच्छा, manometry is used to measure pressure. Pressure changes को measure करती है manometry. और 24-hour pH monitoring करती है. You are confusing two investigations. Stomach. These X-rays can help your doctor see damage to the lining of your esophagus. Because the symptoms of stomach ulcers can be similar to those of esophageal ulcers, this X-ray helps your doctor to determine if We usually do not do barium swallow for GERD, but we do it for Echlesia, क्योंकि उसमें bird weak appearance आती है. one of these types of ulcers is causing your symptoms. Another common test is called endoscopy. Endoscopy is a procedure where a small, flexible tube is inserted through your mouth and into your esophagus. This tube also has a camera attached to it, so your doctor can look for problems in your esophagus and stomach. A biopsy, a small piece of tissue, may be removed for further study if anything is found that doesn't look normal. A tissue sample may also help your doctor determine how severe your GERD is.
A test called Esophageal Manometry can be done to see if the contractions of your esophagus are especially weak. This is done by inserting a small, flexible tube into your throat to monitor peristalsis and to check the strength of the sphincter. If the lower esophageal sphincter and/or peristalsis are found to be weak, it may explain why you are having symptoms. Also, an esophageal pH test may be done in order to confirm your diagnosis and measure the amount of acid reflux into your esophagus at different times during the day. This can be used, for example, to see if acid reflux only happens when you are lying down or at night after you go to. Now the question is, a 32-year-old man comes to the emergency department for substernal chest pain for 2 hours duration. ठीक है, substernal chest pain. DD could be angina, could be MI. He says that he sometimes get this pain while lying in the bed at night. तो उसको usually हो रहा था. It's not like उसको अभी start हुआ. He otherwise free of symptoms, but except for a non-productive cough. Like non-productive cough भी start हो गई है because it triggers nerve endings in the lungs also get triggered जब esophagus is hit by the acid. तो इसलिए cough होती है उसको. For a past month or so, physical examination is unremarkable. ECG is normal, so it's not angina or MI. He was given sublingual nitroglycerine and he notes chest discomfort was worsened. Why was nitroglycerine given? Because we suspected angina या MI now. लेकिन उससे क्या हुआ कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन और खराब हो गई और वो और कॉन्ट्रैक्ट कर गया. वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है. नाइट्रोग्लिसरीन विल कॉज मोर कॉन्ट्रैक्शन. इसीलिए यहाँ पे नाइट्रेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए थे. वो ऑलरेडी अनएबल टू क्लोज है, खुला हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड पड़ा हुआ है. अगर हम ये कैल्शियम चैनल एंटागनिस्ट नाइट्रेट देंगे तो वो वर्सन करेंगे चेस्ट पेन को. A number of factors can cause decreased tone or loosening of factors. Nicotine, alcohol, anticholinergics, calcium channel blockers और nitrates ये worsen कर देते हैं सारी इसको. Also, can somebody repeat कि क्या-क्या complications हो सकती हैं if somebody has GERD? One is कि पहले तो esophagitis, then Barrett esophagus. Barrett esophagus is a result of long-standing GERD. Metaplasia होती है squamous epithelium से intestinal epithelium. Intestinal epithelium क्या? Columnar. नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड टू कलमनर गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं. ये गॉबलेट सेल आ गए इसमें. अब जब बैरेट एसोफेगस हो जाता है तो आपको 1 to 2 ईयर बाद एंडोस्कोपी करनी होती है, सर्वेलेंस टू चेकआउट कि कार्सिनोमा में तो कन्वर्ट नहीं हो गया. अब ये जो व्हाइट वाला जो लेसर ये वाला पोर्शन है ये नॉर्मल है और जो इंटेस्टाइनल हो गया ये पिंक हो गया. इंटेस्टाइनल कौन सा एपिथेलियम है? कलमनर एपिथेलियम. तो कॉम्प्लिकेशन आर एसोफेजाइटिस, इन्फ्लेमेशन होगी एसिड बार बार टच करने से एपिथेलियम लेयर की. देन बैरेट एसोफेगस डेवलप करेगा विच इज मेटाप्लेसिया of the epithelial lining. Then anemia due to bleeding. Then there will be benign esophageal stitches. क्यों होगी? क्योंकि बार बार इन्फ्लेमेशन होगी, जब वो हील करेगी फाइब्रोसिस होगी एंड देन देयर विल बी नैरोइंग और इसके बाद वल्वुलस होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए शुरू हो जाएगी. A 55-year-old male presented with 2 months history of retrosternal pain, reflux of food content, sometime reaching to the pharynx. Whenever he bends forward during prayers, he also has nighttime attacks of cough and wheezing. Physical examination is unremarkable. What is the most likely diagnosis? उसका lower esophageal sphincter does not close. It remains open. तो फूड जब वो प्रे कर रहा है तो वो नीचे से आ रहा है. कफ वाला पॉइंट ये है कि when acid touches esophagus the nerve endings are stimulated, right? Nerve endings take response to the brain and brain responds that there will be more mucus production in the lungs. और जो smaller जो होती है ना
bronchioles, they will constrict. Reflux में कफ होता है. What should be the diagnosis? Acha, what are the 3 treatment options available should be used initially? Yes, proton pump inhibitors. और क्या था? हमारे पास ये 5 ऑप्शंस है. हम एक तो एंटासिड भी दे सकते हैं. एंटासिड क्या करते हैं? कोट करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं फेमेट्रोडीन. राइट, वी हैव टू गिव प्रोटॉन पंप फॉर 6 to 12 वीक्स. उसके बाद हमारे पास क्रिप्टोप्रोटेक्टिव एजेंट्स भी, अल्सैनिक एसिड होता है, वो सारा कोट कर देता है. 1 ग्राम देना होता है 1 आवर बिफोर मील. उसके बाद हम मोटेलिटी इनहेंसिंग ड्रग दे सकते हैं, मोटेलियम, जो कि नीचे की तरफ लेके जाए, ऊपर फूड ना है. ये इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं इनिशियली. एंड बेस्ट इज प्रोटॉन पंप और एन H2 receptor agonist. What lifestyle advice would you give? What lifestyle advice would you give? Head elevation, caffeine, fats को सबको curtail करना है. What else? खाने के आपने almost 2 hours बाद सोना है. खाने के साथ large quantity of water को नहीं consume करना. Yes, do not sleep after. What else? Chocolate, caffeines avoid कर ली. Weight loss, lifestyle advice में देना है. Do not take drugs with milk. No evidence. अच्छा, a 44-year-old male who is morbidly obese, अब GERD का causative factor are complaints of heartburn and indigestion. He also experiences water brush. वाफिस आता है मुंह में और इसके सारा enamel और चीजें भी erode कर जाएंगी. An endoscopy is performed and hiatus hernia is found. What are the 2 types of hernia? 2 types of hernia क्या होते हैं? स्लाइडिंग hernia और paraesophageal. Paraesophageal का मतलब है कि जो esophagus है उसके साथ एक और चीज आ गई, para, something comparison में आ गया. और स्लाइडिंग क्या है कि गैस्ट्रिक कार्डिया ऊपर चला गया. ये देखो, ये कार्डिया है, ये मैंने ग्रीन कलर की लाइन बना ली डायफ्राम की. जब गैस्ट्रिक कार्डिया ही ऊपर चला जाता है तो हम उसको स्लाइडिंग hernia कहते हैं कि ये लाइन जो है ना, डायफ्राम की लाइन जो थी वो खुली हो गई, हियाटस आ गया उसमें और कार्डिया के साथ ही ऊपर चला गया. दूसरा हमारे पास है पैरा एसोफेजियल हियाटस हर्निया, जिसमें गैस्ट्रिक फंडस जा रहा होता है. इसमें ऐसे होता है कि ये वाली ओपनिंग तो ठीक रह गई, यहाँ पे एक और ओपनिंग आ गई जिससे फंडस ऊपर आ गया, तो वो पैरा एसोफेजियल हो गया. एसोफेगस के साथ ही एक और बॉडी निकलाई. सो वी हैव स्लाइडिंग एंड पैरा एसोफेजियल. पैरा एसोफेजियल में एक और होल हो गया तो उसके पूरा फंडस ही बाहर निकलाया. और स्लाइडिंग हर्निया में क्या हुआ? कार्डिया के साथ ही ऊपर चला गई. दिस इज ब्रॉडेन और कार्डिया ऊपर जा रहा है, तो स्लाइडिंग हर्निया. Write 4 complications associated with gastroesophageal reflux disease and list treatment option. What are the 4 complications? Esophagitis, Barrett esophagus, then anemia, then Barrett esophagus के साथ ही carcinoma. Anemia के बाद क्या होता है? What happens after anemia?
इस esophagitis, Barrett esophagus, anemia, स्ट्रिक्चर डेवलप होता है उसके बाद, फिर गैस्ट्रिक वल्वुलस होता है। सिम्टम्स में ये जो कफिंग है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, ये सारे सिम्टम्स में आते हैं। होर्सनेस क्यों होती है? क्योंकि जो एसिड रिफ्लक्स होके अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे जाता है ना, वहां से इट कैन एंटर फेरिंग्स, इट कैन एंटर लेरिंग्स, इसीलिए होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। साथ में कफिंग को स्टिमुलेट करेगा, ड्राई कफ होगी, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी। ठीक है, एसिड क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फेरिंग्स लेरिंग्स में एंटर हो जाएगा, तो यू विल हैव होर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ स्टिमुलेट होगी। And list the treatment options. Treatment option include lifestyle changes, medical therapy, surgical therapy. Lifestyle changes में weight loss करें, head elevate करें patient का, tell them not to consume large amount of water during eating, and do not go to sleep right after having a meal. Stay up at least for 2 hours. Do not consume excess caffeine, chocolate. Drugs like nitrates, calcium channel antagonist will make your conditions worse. Medical treatment, we have proton pump as the best therapy. And H2 receptor antagonist, cryptoprotective agents, motility enhancing drugs, antacid, surgical में Nisan fundoplication. Okay, a middle-aged lady has presented with severe burning sensation behind the sternum, along with regurgitation and feeling of stickiness of the food at the level of episternum, xiphisternum, sorry. On examination, she is obese lady with normal physical examination. xiphisternum पे उसका ऐसा लगता है कोई food उसका चिपका हुआ है. Stickiness है. What is the likely diagnosis? 3 specific tests. How will you manage the patient? Why not productive cough? Protective cough होती है जब बैक्टीरिया लगे होते हैं. There are no bacteria. It's cough due to reflex. प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है बलगम आ रहे. बलगम कैसे आएगा? तो एसिड रिफ्लक्स होके जा रहे, इरिटेट कर रहे नर्व एंडिंग, सो दैट्स व्हाई यू आर हैविंग कफ. What is the likely diagnosis here? Name 3 specific tests to confirm. We will do upper GI endoscopy, and we will take biopsy if age greater than 50 to 55 years to rule out carcinoma, 24 hours pH monitoring, and manometry. Manometry क्या शो करेगी? Tone problem शो करेगी. Lower esophageal reflux will remain open. Hyper उसकी tone हुई होगी. How will you manage the patient? We have 3 options: lifestyle modification, medical and surgical treatment. अब इसका बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट एक केस है जिसको हम कहते हैं एक्लेजिया. उसमें the lower esophageal sphincter remain closed. अब जब कोई चीज remain closed करेगी तो passage obstruct हो जाएगा. Food will not go down. It will stay in esophagus. Vomiting feel होगी. The person will stop eating because nothing is going down. ठीक है, echlesia lower esophageal sphincter remain closed. क्यों? Because the release of nitric oxide के inhibitors, nitric oxide inhibitors defective हो गए. दूसरा, the ganglion cell are affected in the esophagus, like these are 2 causative factors. Inability to lower esophageal sphincter to relax due to loss of ganglion cell in Auerbach plexus. एक तो idiopathic है, दूसरा है chronic Chagas disease से. और इसमें हो क्या रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड को के जो इनहिबिटर्स हैं जो रिलीज कराते हैं वो डिफेक्टिव हो गए. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराती है? वेसोकंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन. कॉन्ट्रैक्ट करवाती है मसल्स को, या डायलेट कराती है, रिलैक्स कराती है.
कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, रिलैक्स करवाती है? What does it does to the muscles? Nitric oxide. रिलैक्स कराती है. तो अब ये रिलैक्स स्टेट में ही पड़े हुए हैं. There is nothing stopping them from being in relaxed state. हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है. अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाते तो वो ओपन हो जाता. अब ये रिलैक्स स्टेट में ही पड़ा हुआ है, क्लोज्ड पड़ा हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओपन होगा. क्लिनिकल फीचर्स आएंगे. Dysphagia to both solid and liquids. कुछ भी नहीं खा सकते because the pipe is closed. बैड ब्रेथ होगी क्योंकि फूड एक्यूमुलेट कर रहा है एसोफेगस में. सबसे पहला टेस्ट जो हम करवाते हैं एक्लेजिया का, वो करवाते हैं बेरियम स्वेलो, और इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस आती है क्योंकि यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में देयर इज नैरोइंग. उसके बाद मैनोमीट्री कराते हैं एंड इट शोज के लोअर एसोफेजियल टोन इज इंक्रीज्ड. एंडोस्कोपी कैरी आउट करते हैं टू रूल आउट कार्सिनोमा. बेरियम स्वेलो टेपर्ड नैरोइंग शो करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की. और मैनोमीट्री करते हैं, वो कंफर्म करता है हाई प्रेशर नॉन रिलैक्सिंग लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर विद पुअर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. इट इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इट्स अनएबल टू ओपन. अब व्हाट डू यू थिंक शुड बी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एक्लेजिया? मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एक्लेजिया का? सी, एक्लेजिया ऑपोजिट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट नहीं दे देते. इसमें हम दोनों दे सकते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दें, नाइट्रेट्स दें, तो इट विल ओपन अप. दूसरा हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स है. बैलून डायलिटेशन करें या हम सर्जिकल मायोटमी करें. अब बैलून डायलिटेशन ऐसे होती है. ये दिस विंटर इज क्लोज्ड, कंस्ट्रिक्टेड पड़ा हुआ है. बैलून लेके जाओ वहां पे, डायलेट करो. So it's a little improved. दूसरा हमारे पास हेलर मायोटमी The है. lower esophageal sphincter, or LES, is a one-way valve that separates the esophagus from the stomach. When food or liquid is swallowed, the LES opens transiently to allow passage into the stomach. Otherwise, the sphincter remains closed to prevent stomach contents from flowing back up into the esophagus. In patients who suffer from reflux, the LES abnormally remains open, allowing stomach secretions and contents to reflux up into the esophagus, causing symptoms. However, in patients suffering from echlesia, the opposite from reflux happens. The LES remains ये अभी पड़ा हुआ है unable to relax, और ये bird beak tapering हुई हुई है lower abnormally esophageal closed, sphincter की. preventing food and liquids from easily passing into the stomach, especially given weak or even absent esophageal peristalsis. Food is essentially falling by gravity after swallowing. Given the delay in food passage into the stomach, the lower esophagus dilates. Symptoms stem from food failing to clear the LES, leading to food regurgitation, difficulty swallowing, and even chest pain. Interestingly, achalasia symptoms are often confused with reflux. Should conservative medical management fail to resolve symptoms, a Heller myotomy can be performed to widely open the LES by incising it in order to make it easier for food to fall into the stomach. Esophageal peristalsis is not able to be restored, but तो इंसिजन देके हेलर मायोटमी कर देते हैं उसे.
could be done laparoscopically or open surgery में. A 32-year-old woman with no past medical history comes to your office for evaluation of difficulty swallowing of food. She reports food sticking in her chest. Chest पे stick कर रहा था, नीचे नहीं जाता. She has had this problem for almost a year. It is most difficult for her to eat solids. Solids तो बिल्कुल नहीं जाते. Liquids तो फिर भी चलो, अगर there is narrow opening तो liquid से पास कर जाए, solid तो बिल्कुल stick करते रहेंगे. अच्छा, अब इसमें weight loss भी होगा. The person is complaining of dysphagia. Her symptoms have not worsened at all over the time period and her weight has been stable. Physical examination remain unremarkable. What is the next step of evaluation? First step हम क्या करते हैं evaluate करने का? In eclasia, yes, muscle relax करेगा, sphincter open होगा. बेरियम स्वेलो करते हैं, उसमें लोअर एसोफेजियल की टेपरिंग नजर आती है. उसके बाद हम क्या करते हैं बेरियम स्वेलो के बाद? मैनोमीट्री कराते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं विद बायोप्सी. A 45-year-old female presents at OPD with complaints of difficulty in swallowing for food and liquid for last 1 year. This is accompanied by nocturnal coughing and vomiting undigested food taken 2 to 3 days ago. अब ये food क्या कर रहा है? Reflux करके क्या जाएगा? वापस food pipe से निकल के क्या जाएगा? Wind pipe में जाएगा और trigger करेगा cough reflex को. कोई भी चीज जब आप खा रहे हो तो आपके wind pipe में जाती है तो खांसी आने लग जाती है. That's what happening here. मैनोमेट्री क्या शो करती है? प्रेशर चेंजेस शो करती है. एकलेजिया में क्या होगा? देयर विल बी मोर प्रेशर. नीचे कुछ जा ही नहीं रहा होगा. जर्ड में क्या होगा? लेस प्रेशर होगा. मैनोमेट्री शोज प्रेशर. एकलेजिया में बहुत हाइपर प्रेशर होगा, हाइपरटेंसिव स्टेट होगी. And vomiting shows undigested food taken 2 to 3 days ago. What is the likely diagnosis? Name the investigation you would like to carry out in this patient. Barium swallow करेगा, tapered narrowing of the lower esophageal sphincter. और मैनोमीट्री क्या कंफर्म करेगा? हाई प्रेशर होगा, नॉन रिलैक्सिंग लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, हाई प्रेशर होगा. और जब हम उधर करेंगे जर्ड में मैनोमीट्री, उसमें लो प्रेशर होगा. A 26-year-old female presents with complaint of difficulty swallowing, which has worsened gradually over last 1 year. She gives history of feeling as if food gets stuck in the mid-chest. She notices that swallowing is difficult, is worse for liquids, and by standing and moving around after eating. She has had 15-pound weight loss and reports occasional regurgitation of undigested food after eating. तो वो वापस भी आ रहे हैं. What is your diagnosis? How will you confirm it? Confirm it में investigations लिखनी है. And give treatment options. Echlesia, how will we confirm it? We will do barium swallow, manometry, and upper GI endoscopy. ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं. हाँ, could be weight loss. Weight loss could be due to carcinoma. तो आप क्या करोगे? एंडोस्कोपी में बायोप्सी लोगे टू कंफर्म, टू रूल आउट. अब मेडिकल हमारे पास ट्रीटमेंट है. नाइट्रेट्स देने होते हैं 5 mg सबलिंगुअली. कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट दे सकते हैं. निफेडापीन 10 to 20 mg orally before meals. दूसरा हमारे पास एक है, हम इंजेक्शन लगा सकते हैं ब्यूटालिन टॉक्सिन के. अब इससे क्या होता है? ये रिपीटेड लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनका असर कोई 6 मंथ तक रहता है, 3 to 6 मंथ तक.
देखो 26-year-old में you cannot write carcinoma, you have to write eclasia. Carcinoma older people की disease है. You have to write eclasia. अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में नाइट्रेट्स कंसंट्रेशन ब्रोकर हम बुटिलिन टॉक्सिन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम रिकरेंट इंजेक्शन देंगे तो स्कार बनेगा, स्कार पे फाइब्रोसिस होगी और उल्टा स्टिचर बन जाएगा, तो बुटिलिन टॉक्सिन आर नॉट रिकमेंडेड इंजेक्शंस में देते हैं उसके. उसके बाद हम एंडोस्कोपी में फोर्सफुल बैलून डायलिटेशन करा सकते हैं, और सर्जरी में क्या करते हैं, मायोटमी कर सकते हैं, हेलर्स मायोटमी. इसके बाद वी विल डूइंग एसोफेजियल कार्सिनोमा. Long standing GERD is the cause of esophageal carcinoma. अब esophageal carcinoma में दो टाइप्स होती हैं, एक है स्क्वेमस, एक है एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा जो होगा यूजुअली वो नीचे होता है और वो एसिड की इरिटेशन से होता है, लोअर 1/3 में होगा और एसिड की इरिटेशन से होगा. जैसे किसी को जर्ड हो, देन दे डेवलप बैरेट मेटाप्लेसिया होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाएगा. ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर, आल्सो जर्ड, ओबेसिटी से जर्ड होगा. उसके बाद हमारे पास है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो अपर और मिडल में होगा और इसमें अपर एसोफेगस पे डैमेज होगा. कैसे डैमेज होगा, जब आप हॉट बेवरेजेस कंज्यूम करोगे, एकलेजिया होगा, फूड नीचे ही नहीं जाएगा. राइट, जेंकस डाइवर्टिकुलम, लाए लाए होता है, एल्कली टाइप की एक सब्सटेंस होती है, उसको इंजेस्ट करोगे, उसके बाद सारे स्टिचेस बन जाते हैं एंड इट डेवलप्स इनटू कार्सिनोमा. जो अपर लोकेशन की वजह से सिम्टम्स होंगे वो रिकरेंट रेंजियन नर्व कंप्रेस होगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस और कफ होगा. कफ क्यों, बिकॉज अगर एकलेजिया फूड ऊपर ही पड़ा हुआ है, इट एंटर्स योर फेरिंक्स, लेरिंक्स, इट ट्रिगर्स brain response and you have reflex cough, it's non productive cough. अच्छा, both type increase in smokers क्योंकि intestinal metaplasia का ट्रिगर करता है स्मोकिंग, और दूसरा जर्ड जो होती है वर्सन होती है ड्यू टू स्मोकिंग. ठीक है, कैफीन, चॉकलेट्स, स्मोकिंग, जिसको जर्ड हो रहा है उसमें सारी मना कर देते हैं. और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, इट स्टार्ट्स विद सॉलिड्स एंड देन एज द ट्यूमर ग्रोस लिक्विड भी कंज्यूम नहीं कर सकेंगे. वेट लॉस होगा, ब्लड एंड वॉमिटिस भी आ सकता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, अपर जीआई एंडोस्कोपी. बेरियम स्वेलो इनिशियली करा लेते हैं कि रूल आउट के स्टिचर तो नहीं है, स्टिचर कुड बी बेनाइन. फिर हम ट्यूमर की स्टेजिंग करवाने के लिए सीटी कराते हैं, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं टीएनएम स्टेजिंग कराने के लिए. उसके बाद मैनेजमेंट जो है हमारे पास सिर्फ सर्जिकल है, उसको रिसेक्ट कर देते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी, साथ में कीमो देते हैं. कीमो में हम 5FU 5 फ्लोरोयूरेसिल देते हैं. ये इसका ट्रीटमेंट है. चेक दिस क्वेश्चन, अ 62-year-old man, एज देखो. It is not possible. Even if echlesia is causing that, you have to have the disease for longer term, 15 years, 20 years. A 22-year-old can only have GERD or echlesia. They cannot have carcinoma. इसीलिए वो डायग्नोसिस वहां पे गलत था. A 62-year-old man comes for evaluation of progressive, like this word, progressive difficulty for swallowing solid and recently semi solid. अब उसको difficulty होने लगी. 4 months से 20 pound उसका weight loss हो गया. His past medical history is significant for reflux esophagitis. ठीक है, अब वो smoking करता था. Smoking increases your acid production. फिर उसको GERD हुआ, then esophagitis हुआ, कांस्टेंट इरिटेशन हो रही है ना एसोफेगस की, और इसके बाद सी एसोफेगस हुआ. दिस हिस्ट्री मेक्स सेंस. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन उसके लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट भी है. अगर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है तो इट शोस अपर एसोफेगस जो है इन्वॉल्व है. अगर लोअर वाला होता, लोअर एडिनोकार्सिनोमा का होता है,
ऊपर कौन सा होता है? स्क्वेमस कार्सिनोमा वाला। एडिनोकार्सिनोमा होता है तो celiac and gastric nodes are more likely to be involved. Now 55-year-old heavy smoker presents with progressive dysphagia, two solids and significant weight loss over 3 months. On examination, he is pale, emaciated and no detectable clinical abnormality. Give two most likely possibilities of this clinical condition. Two DDs देने हैं. एक तो हो गया CA esophagus. What is the other DD? Dysphagia, unable to swallow. Dysphagia है, unable to swallow. स्ट्रिचर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बिनाइन स्ट्रिचर हो सकते हैं, एक्लेसिया हो सकता है. Give three most useful investigations for this case. अपर GI एंडोस्कोपी करवाओ प्लस बायोप्सी, बेरियम मील, बेरियम स्वेलो, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन. Enumerate two most important steps in management of this disease. अगर तो कार्सिनोमा आता है तो सर्जरी और कीमो करना है. अगर स्ट्रेचर आते तो उसकी स्ट्रेचर की प्लास्टी करनी होती है. अगर एक लेजिया आता है तो उसको एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन करनी होती है या हेलर मायोटमी करनी होती है. A 75-year-old man, most likely carcinoma होगा 75, is brought with progressive difficulty in swallowing, especially solid. He gives history of chronic retrosternal pain preceding dysphagia. On examination, the men look emaciated and pale. Name three possible diagnoses. क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? Three possible diagnoses. CA esophagus, eclasia, progressive difficulty in swallowing है, उसमें रेट्रोस्टर्नल पेन तो swallowing में पेन नहीं थी. जर्ड मैंने ना इसका लिखवाया है क्योंकि swallowing में पेन नहीं होती जर्ड में, एक्लेजिया में होती है क्योंकि नीचे नहीं जा रहा. रेट्रोस्टर्नल पेन तीनों में होती है. एक्लेजिया स्ट्रिचर हो सकता है. Name three investigation. What is the long-term treatment? Long-term treatment, carcinoma treatment of choice, surgery होगी with chemo देनी है 5 FU.